Citizen Charter. In the 12th report, the second ARC characterized the Citizen Charter as an instrument that seeks to make an organization transparent, accountable, and citizen friendly. Citizens Charter is essentially a series of agreements made by an organization regarding the services standards that it provides. Meaning of citizen. The term citizen in the Citizen Charter refers to the client or customer whose interests and values are addressed by the Citizen Charter and thus include not only citizens but also all stakeholders, that is, citizens, customers, clients, users, beneficiaries, other ministries, departments, organizations, state government, UT administrations, and so on. The efforts encompasses not only central government, ministries, department, organizations, but also state government departments and UT administration. Characteristics of a Citizen Charter: satisfaction of citizens, interacting and training for responsive climate, participatory formulation of staff and users, feedback and performance audit, participatory formulation of staff and users, feedback and performance audit, procedures and cost display, simple and useful, and entitlement of users, services and standard accountability. सिंपल और यूजफुल होता है, एंटाइटलमेंट ऑफ यूजर्स होता है, सर्विसेज होता है, स्टैंडर्ड्स होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है इसमें, सिटीजन के सेटिस्फेक्शन पर ध्यान दिया जाता है, इंटरेक्टिंग होता है, ट्रेनिंग फॉर रिस्पॉन्सिव क्लाइमेट दिया जाता है, पार्टिसिपेटरी फॉर्मुलेशन होता है स्टाफ का और यूजर्स का, फीडबैक एंड परफॉर्मेंस ऑडिट भी होता है इसमें, प्रोसीजर्स एंड कॉस्ट पर दिखाया जाता है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सिटीजन चार्टर के, है ना। और इवोल्यूशन कैसे हुआ सिटीजन चार्टर का? फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर, द यूनाइटेड किंगडम वाज द फर्स्ट कंट्री टू एस्टैब्लिश सिटीजन चार्टर इन 1991, जब मैं पैदा हुई थी, सिटीजन चार्टर लेके आई मैं। Other countries launched comparable schemes to address distinct regional needs, but the notion of transparency and accountability remained consistent. Chief Ministers Conference in India. It was introduced in May 24, 1997 at the Chief Ministers Conference, where a decision was made to implement the Citizen Charter. ठीक है, ऐसे चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1997 में, लकी के बर्थडे के एक साल बाद, वेयर अ डिसीजन वाज मेड टू इम्प्लीमेंट, लकी के फर्स्ट बर्थडे पे, where a decision was made to implement the Citizen Charter, particularly in areas with a high public interface. Legislative action. The Resident Charter Bill of 2011 was introduced in 2011 to provide formal backing to Citizen Charter in India. ठीक है, एक रेसिडेंट चार्टर बिल 2011 ने फॉर्मली बैकिंग कर दी सिटीजन चार्टर की. इट इंटेंड्स टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर अज्यूमिंग द टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू रेसिडेंट्स. It requires any public authority to publish a citizen charter within 6 months of the act's adoption, or face a fine of up to rupees. अच्छा, requires any public authority to publish a citizen charter within 6 months of the act's adoption, ठीक है, और face a fine of rupees up to rupees 50,000. The Indian government has built and published a comprehensive platform for citizens charters, www.goi government of India charters.in, which contains citizens charters issued by various ministries, departments, organizations of the central government. The Panchayati Raj Ministry published a model Panchayat Citizen Charter. It was created to supply services across 29 areas while matching efforts with the localized sustainable development goals. The importance of Gram Panchayat Citizen Charter. Professionalism. It enhances Panchayat's functioning and aids to reaching out to all sectors of society without discrimination. Monitoring and assessing service delivery. Panchayat's promises serve as great standards for monitoring and assessing service delivery. More accountability and grassroots. It will help residents understand their rights while also holding panchayats and their elected representatives directly accountable to the people. Component of Citizen Charter. According the following elements should be included in a strong Citizen Charter: vision and mission organizational statement, detail of the organization's business transactions होना चाहिए, citizens और clients information होनी चाहिए, statement of service offered to citizen or client group separately including standards, quality, time period, how, where to obtain the services. फिर क्या होना चाहिए? इन्फॉर्मेशन अबाउट द ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड हाउ टू यूज इट होना चाहिए उसमें. एक्सपेक्टेशंस ऑफ सिटीजन्स और क्लाइंट्स होना चाहिए. एडिशनल प्रोमिसेस होनी चाहिए सच एज रिइंबर्समेंट इन द इवेंट ऑफ सर्विस डिलीवरी फेलियर, क्वालिटी इंप्रूविंग सर्विस डिलीवरी. और क्या होना चाहिए? चॉइस टू बी मेड अवेलेबल वेन एवर वेयर एवर प्रैक्टिकेबल, एंड सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड होनी चाहिए क्लियरली स्टेटिंग व्हाट टू एंटिसिपेट एंड व्हाट टू डू इफ एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट, है ना. और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. द सिटीजन चार्टर एक्सप्लेन्स द प्रोसीजर एंड ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म इन डिटेल. एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए अप्लाइज टू बोथ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस. अब प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन चार्टर क्या कहता है? देखिए, 6 प्रिंसिपल्स ऑफ द सिटीजन चार्टर मूवमेंट हैज ओरिजिनली फ्रेम्ड वर क्वालिटी, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज चॉइस wherever possible. Standard specify what to expect and how to act if standards are not met. Value for the taxpayers' money. Accountability, individuals and organizations. Transparency, rules, procedures, schemes and grievances. These were later elaborated by the Labour government as the following 9 principles of service delivery, 1999.
तो हमने देख लिया 6 प्रिंसिपल्स हैं सिटीजन चार्टर की, क्वालिटी, चॉइस, स्टैंडर्ड्स, वैल्यूज, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अब इसके बाद हम देखेंगे दीज वर लेटर एलेबोरेटेड बाय द लेबर गवर्नमेंट एज द फॉलोइंग 9 प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विस डिलीवरी इन 1998, जो हमारी राधा पैदा हुई थी। And set standards of service, be open and provide full information, consult and involve, encourage access in the promotion of choice, treat all fairly, put things right when they go wrong, use resource effectively, innovate and improve, work with others providers। ठीक है, उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ सिटीजन चार्टर। तो फीचर्स ऑफ सिटीजन चार्टर में क्या है कि द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स का फीचर्स का की बात है। और सेट ऑफ सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स होते हैं पहली बात तो, ठीक है। द चार्टर शुड एस्टैब्लिश एक्सप्लिसिट सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सो दैट पीपल अंडरस्टैंड व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर्स। दीज रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी सूटेबल, डिपेंडेबल, ऑब्जर्वेबल, एग्जैक्ट एंड टाइम बाउंड। सर्विस डिलीवरी, ट्रांसपेरेंसी एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। क्या कह रहे हैं? यूजर्स हैव एक्सेस टू एक्यूरेट एंड सस्टेंट इन्फॉर्मेशन एट द अप्रोप्रिएट टाइम इन द राइट प्लेस। And in a layman's terms, the charter should provide thorough and detailed information about the resources accessible. And choice and contact with users होना चाहिए। The charter shall provide consumers with a choice of service whatever whenever available to define service expectations and maintain consistency of service delivery. Users of the service should be consulted on a regular and systematic basis. उसके बाद कह रहे हैं fairness and assistance in service delivery. The charter will help to build a culture of friendly and attentive public service, ठीक है। उसके बाद citizens objections and grievances are addressed. There is a strong link between offering high quality service and successfully addressing complaints, ठीक है। By encouraging and responding to concerns, the reasons for complaints can be reduced. Okay, recognizing trends in complaints allow the service provider to address structural and chronic concerns, ठीक है। तो सिटीजन चार्टर्स में फीचर्स अगर हम देखेंगे तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऑप्शंस फॉर चॉइस होना चाहिए, कर्टेसी होनी चाहिए, कंप्लेंट मैकेनिज्म होना चाहिए, इक्वालिटी एंड वैल्यू होनी चाहिए, स्पेसिफिक स्टैंडर्डाइजेशन होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया का क्या एक्सपीरियंस है ना, विद सिटीजन चार्टर। तो DARPG and the Consumers Coordination Council, New Delhi, and NGO performed a study of the citizen charter of several government institutions in October 1998, जब राधा पैदा हुई। Given the initiative infancy in India, the findings were quite optimistic, ठीक है। कैसे करके भैया? DARPG recruited a specialized organization in 2002 and 2003 इसमें, ठीक है। recruited a specialized organization in 2002-3 to develop standardized mechanism for more accurate, quantitative and objective internal and external assessment of citizen charter, ठीक है। मेजर फाइंडिंग्स ऑफ द एजेंसीज असेसमेंट रिपोर्ट इंक्लूडेड चार्टर्स वर नॉट फॉर्मुलेटेड थ्रू अ consultative process in the majority of cases, and service providers are generally unfamiliar with the ideology, goals, key features of the charter, and the charters were not given adequate publicity in any of the departments examined. फिर कह रहे थे कि ना no funds have been expressly set aside to raise awareness of the citizen charter or train workers on the various components of the charter, and the charter are only in the early or middle stages of the development. उसके बाद हम देखते हैं शॉर्टकमिंग्स ऑफ द सिटीजन चार्टर इन इंडिया। पहली बात तो है इनएडिकेटली कंस्ट्रक्टेड एंड लैकिंग ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी। कैसे करके भैया? इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सच एज सर्विस टाइम टेबल्स, इनएडिकेट कंस्ट्रक्शन, लैकिंग ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी है कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सच एज सर्विस टाइम टेबल्स and grievance resolution mechanism and so on is missing, and public awareness is lacking. देखो, public education and communication attempts have been ineffective, and there is a lack of adequate groundwork in terms of assessment and improvement in internal procedures while developing and modifying the citizens charter. तो lack of groundwork in terms of assessment and improvement है। And no update. The creation of charter is viewed as a one-time event that is not updated regularly. And no stakeholder consultation. When charters are drafted and users, civic society, other stakeholders are not consulted, and the interests of the elderly and the poor are not looked when charters are being drafted. And the agency and staff's behavior and attitude towards charters attribute to reform resistance, and lacking understanding service providers, lack of understanding of the citizens charter's concept and goals and essential elements. All ministries and departments have yet to come up with the citizens charter, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि lacking proactive dedication. In many circumstances, services providers lack dedication and precision in standards and service delivery. Absence of grievance redressal mechanism है. In the absence of an offended party, efficient and sufficient grievance redressal mechanisms often do not give information in the vernacular language. Reluctancy. Organizations are frequently reluctant to carry out the citizens charter's obligations because there is little motive or desire to impose them on their staff. Okay. उसके बाद हम पढ़ेंगे measures to implement the citizens charter. उससे पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं कि हमने कहा था रिलक्टेंसी, एब्सेंस ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल है, एंड लैकिंग प्रोएक्टिव डेडिकेशन है, लैकिंग अंडरस्टैंडिंग है, नो स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन है, नो अपडेशन है, एंड लैक ऑफ एडिकेट ग्राउंड वर्क इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट एंड इंप्रूवमेंट, एंड इनएडिकेसी एंड लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस,
इसके बाद ये देखते हैं हम कि जब ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीजन फ्रेंडलीनेस रहती है तो वो सिटीजन चार्टर कहलाता है। सिटीजन चार्टर क्या है? गुड गवर्नेंस इज द टेक्नोलॉजी एंड सिटीजन चार्टर इज द टूल। ठीक है, अच्छा है, बना सकते हैं, अभी बना के आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि मेजर्स टू इम्प्लीमेंट द सिटीजन चार्टर। सेकंड आरसी रिकमेंडेड द फॉलोइंग एक्शंस टू इंश्योर द सिटीजन चार्टर सक्सेस एंड कंसिस्टेंसी इन सर्विस डिलीवरी। एंड इसमें कह सकते हैं पहला कि मेकिंग सिटीजन चार्टर इफेक्टिव, द चार्टर्स should clearly state the remedy for penalty compensation in the event of a failure to satisfy the requirements outlined in the charter, and broad consultation process होनी चाहिए. Citizen charter should be developed after completing the consultation inside the institution and between the organization and the civil society. In the event of a failure, an adequate grievance redressal mechanism must be in place. The citizen charter should explicitly state the relief that the organization is obligated to provide if it fails to meet the specified service criteria. है ना, in the event of a failure, an adequate grievance redressal mechanism must be in place. The citizen charter should explicitly state the relief that the organization is obligated to provide if it fails to meet the specified service criteria and one side does not fit all. The capabilities, resources, and responsibilities of government organizations are not similar, and there is a considerable need to implement the citizen charter across the country. ठीक है, तो कैपेबिलिटी जो होती है, रिसोर्सेज जो होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट सिमिलर एंड देयर इज कंसिडरेबल नीड टू इम्प्लीमेंट द सिटीजन चार्टर अक्रॉस द कंट्री एंड फर्म कमिटमेंट टू बी मेड दिस. The citizen charter should be specific and whatever feasible excluded from obligations of service delivery standards to citizens in quantifiable terms. And the citizen charter should be evaluated and changed on a regular basis. And statutory assurances. The citizen charter must include statutory assurances for the right to receive services and create the information and facilitation centers. Every public authority was required by the bill to construct information and facilitation centers to provide efficient and effective service delivery and grievance redressal. And a citizen charter in every department will send a strong message that the government is committed to preventing and controlling corruption. समझ रहे ना? And public grievance redressal procedures requires an effective grievance redress procedures. ठीक है ना, public grievance redressal procedures होनी चाहिए उसमें, ताकि requires an effective grievance redressal procedures that regardless of the ultimate decision makes the citizens feel more at ease with how the organization handles problems. And capabilities to service delivery. For service delivery, only if an organization controls the main components for successful service delivery well and consistently improves its capacity to boost its delivery can it achieve excellent service delivery efficiency. Because citizen charter is related to service delivery capabilities and service delivery capability to grievance redressal, and भी इसको बोलते हैं ट्रिनिटी ऑफ सर्वोत्तम मॉडल, है ना. ट्रिनिटी ऑफ सर्वोत्तम मॉडल का मतलब है कि सिटीजन चार्टर से संबंधित है ग्रीवांस रिटर्न से संबंधित है सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटीज एंड सर्विस डिलीवरी कैपेसिटी से संबंधित है सिटीजन चार्टर, है ना. एंड इसी बात पे हम बात कर लेते हैं ग्रीवांस द सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्वोत्तम मॉडल. एंड फ्रॉम अप्रैल 2009 टू जून 2010 द सर्वोत्तम मॉडल वाज द फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन लेवल गवर्नमेंट एजेंसीज विद लार्ज पब्लिक इंटरफेरेंस. एंड BIS then produced the IS 15,700/2005 standard, which permits public service organizations to be granted the Sarvottam symbol of excellence if they implement and demonstrate compliance with a set of management systems. And the Sarvottam model is designed to access an organization's ability to enforce the citizens' charter, implement grievance resolution procedure and provide services, है ना. और सिग्निफिकेंस ऑफ सर्वोत्तम मॉडल क्या है? पहले बात तो इंटीग्रेटेड अप्रोच है ना. चार्टर मार्क, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल, सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटीज़, है ना. अब चार्टर मार्क बनाया है आपने तो सिटीजन एम्पावर होगा उससे. पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल किया है तो रिड्रेस सेटिस्फेक्शन होगा. सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटीज़ हैं तो कैपेसिटी एनहेंसमेंट होगी. एंड इससे क्या होगा कि इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ द पब्लिक सर्विस डिलीवरी होगी, है ना. ये है सिग्निफिकेंस ऑफ सर्वोत्तम मॉडल का. उसके बाद हम देखेंगे कंक्लूजन की द सिटीजन चार्टर सर्व एज अ टूल फॉर इंप्रूविंग ग्रीवांस, improving governance, enhancing public trust, and promoting citizen-centric service delivery. It empowers citizens by making public service more accessible, accountable, and responsible to their needs. उसके बाद हम देखेंगे वर्क कल्चर. तो वर्क कल्चर में बेसिकली कंपोनेंट ऑफ पॉजिटिव वर्क कल्चर, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव वर्क कल्चर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ हेल्दी वर्क कल्चर, एंड फिर है इशूज़ एंड चैलेंजेस विद द पुअर वर्क कल्चर. एंड इसी के साथ साथ फिर ये हो गया एंड दैन की कंसर्न्स इन इंडियन वर्क कल्चर, factors responsible for poor work culture among civil servants, and measures needed to improve work culture in Indian and civil services, and way forward and conclusion. उसके बाद क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी आ जाएगा. अभी हम करेंगे वर्क कल्चर. ठीक है.